Hey everyone. आज हम in this session we'll see how to install Claude Code on our local machine and use Claude Code without any fear, without paying any single penny to anyone. Because आजकल Claude is quite having a big hype in the IT world. So, but they are having the subscription plan. और in India अगर हमें यूज़ करना है क्लाउड कोड तो हमें उन्हें भी टैक्स $20 देने होंगे फॉर अ नॉर्मल प्रो यूज़र, या फिर $100 देने होंगे फॉर मैक्स यूज़र, बिकॉज मैक्स यूज़र के पास कुछ ज़्यादा प्रिविलेजेस हैं, कंटेक्स्ट ज़्यादा बड़ा होता है. बट वाई टू पे इफ वी वांट टू लर्न क्लाउड कोड? तो वो हम इंस्टॉल कर सकते हैं अपनी लोकल मशीन में. बहुत मुश्किल है इंस्टॉल करना. तो इट विल टेक हेल ऑफ अ टफ टाइम. नो, नॉट एट ऑल. सिर्फ 3 steps and your cloud code is running on your local machine. Very very easy. And thanks to Ollama, which has given us that kind of privilege, that we can install and use Claude Code on our local machine. तो आज हम देखते हैं. So I have created these steps which I will be providing you into the description of this video. तो सबसे पहले हम जाते हैं ओलामा की वेबसाइट पर और हम डाउनलोड करते हैं ओलामा. तो यहाँ से हम ओलामा को डाउनलोड कर लेंगे. इफ वी क्लिक दिस थिंग here, so we can download Ollama for Windows. So once our Ollama is downloaded, okay, so आपका Ollama कैसे चलने लग जाएगा? Let's see. I haven't shared my screen. I'm really sorry for that. So let me share my screen first. So let me pause the recording and then we'll speak. Okay. So now we are back again. So we have to download Ollama. So once we click here, so we can download the Ollama. So all the instruction I will be providing in the description of this video. Okay, so there are 3-4 steps. So once you have downloaded the Ollama, now you have to install, you have to run this command to have your Claude Code. So after that you have to run this IRM https cloud AI डॉट इंस्टॉल. आपको पावर शेल में जाना है. फॉर एग्जाम्पल हाउ टू गो. विंडोज़ में भी यूज टू है पावर शेल. अगर आपके पास नहीं है तो आप इंस्टॉल भी कर सकते हैं. एंड यू जस्ट हैव टू कॉपी and paste this command once you have downloaded Ollama. Okay, so we go to this place and we just enter it. Okay, after that you have to run the Ollama. So let us go and Ollama तो हम डायरेक्टली रन कर सकते हैं फ्रॉम आवर GUI इंटरफेस. Ollama ऐप को आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अब हम इसमें से कौन सा मॉडल वी शुड यूज. सो ओलामा सजेस्टेड दैट क्विन 3 क्वार्टर इज वन ऑफ द बेस्ट. बट आपके सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि अगर आपका सिस्टम इज एप्पल, हाँ, मैक जो है M4 Pro है वो इट वर्क्स वेरी स्मूथली. लेकिन अगर आपके पास विंडोज़ डेस्कटॉप है विद डेल का या और कोई कंपनी का, तो आई वुड सजेस्ट गो फॉर अ 3.2 बिलियन पैरामीटर टू सी व्हाट एग्जैक्टली. तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको सारे मॉडल्स नज़र आ जाएंगे. तो हम यूज़ करने वाले हैं ओलामा 3.2. ओके, तो अगर आपकी मशीन पे इंस्टॉल नहीं है तो थोड़ी देर में इंस्टॉल हो जाएगा ये जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे. एंड वेट फॉर आई थिंक 4-5 minutes. एंड देन इफ यू से हाय तो आपका मॉडल स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग. लेट मी पुट माय लैपटॉप इनटू पावर मोड. Yes, now it's growling like anything. So how can I assist you? So Llama is working. We have installed the Claude Code. अब हमें क्या करना है? अब हमें PowerShell में जाना है. PowerShell. और हमें एक कमांड रन करनी है. What is the command? Ollama launch Claude Code hyphen config. Okay. So config हम इस वजह से
लिखते हैं, बिकॉज अगर आपके सिस्टम पे बहुत सारे मॉडल हैं तो वो आपको ऑप्शंस देगा। ओके, सो अनएक्सपेक्टेड, लेट्स सी व्हाट इज द इशू, llama launch Claude Code. So just a second. ओके, सो वंस यू गिव दिस कमांड तो वो उसके बाद आपसे पूछता है कि कौन सा मॉडल आपको यूज करना है। तो यू विल हैव क्लाउड कोड, okay, running with point 3 coder, start an interactive model, okay, launch Claude Code. So what exactly you want to use? Okay, so जैसे मैंने आपको बोला था कि we can use the other model as well. So but this is, we are running the Ollama with, because we have already initiated Ollama from our GUI mode, so we need not to run it again. So let us just see that if it is already running. So okay, so now we have already executed this command. अब हमने command दे दी है, तो अब हम कौन सा मॉडल यूज करना चाहते हैं। तो what I suggest, let's use Ollama 3.2 and see uh, how the Claude Code is launched. So you have to, because Claude Code में क्या है, Claude Code को एक फोल्डर में हमें रन करना होता है, तो it always asks whether you trust that folder or not. तो आप किसी भी फोल्डर में जाकर के कमांड रन कर सकते हैं, and boom. So now your Claude Code is running on your local machine. Okay, so this way you can run the Claude Code on your local machine without any issue. Okay, so it says that Ollama 3.2 API uses billing. Okay, so account can be any, but it is using Ollama 3.2 model and it is running on your local. So if we say hi, so it will be, providing a response by the local or from your local LLM. Okay, it would take bit of time depending upon the system speed. तो इसी वजह से हमने बेसिक मॉडल यूज करा है। आप कोई सा भी जो रिकमेंडेड मॉडल है, लाइक Qwen 3 कोडर, which is uh, it's say, I hope to example, so it has responded quite beautifully on high, that it looks like you're using Claude for chat platform. I'll help you to understand each and everything. So this way you can use, and if we say here model slash model, तो बहुत सारी कमांड्स हैं क्लाउड कोड की, आप यूज देख सकते हैं। और आप जैसे 3.2 आपका यूज हो रहा है, आप हाइकू यूज कर सकते हैं। ओपस पे चाहेंगे तो आपको फिर सब्सक्रिप्शन मॉडल पे जाना पड़ेगा। ओके, एंड इसके अलावा आप context through you can visualize your context as well, context window and everything. And through config, we have already seen. So this way you can use, Claude Code on your local machine. So need not to pay a single penny to anyone and enjoy, using the Claude Code on your local machine. You can use this into your Visual Studio Code or Cursor, any IDE you want. So it's you just open the terminal and you can use it free without paying a single penny to anyone. उसके बाद we will be having one more session where we will be using Claude Code from our mobile phone as well. So whatever the repository, whatever the code you are having, you can pass on the command from your remote. If you're not with your PC or your system, so you can, wherever you are, your system can be control and be in working mode from your mobile phone. So keep watching, and thank you. Thanks a lot for your time. Bye bye.